Bismillahirrahmanirrahim. This is Cyprus School System, and today we are going to study the possessive adjectives. This topic has been selected from the Oxford Broadway English for grade 1 students. Dear students, this is a table which you can see on the screen for singular and plural pronouns. For singular personal pronoun I, we have the possessive adjective my. Similarly, for you, we have the possessive adjective your, and for he, we use the possessive adjective his. For she, we use the possessive adjective her, and for it, we use its. Coming to the plural category of the personal pronouns, for we use the possessive adjective or, or, and for you, we use the possessive adjective your, and for they, we use their, their. The possessive adjectives are basically used to show possession. जब हमने कब्जा या मिल्कियत या ओनरशिप शो करनी हो तो फिर हम possessive adjectives यूज करते हैं. I की जो possessive form है वो my है. अगर हमें कहना हो कि ये मेरा घर है, this is my house, हम सेंटेंस बोलेंगे this is my house. इसी तरह से हमने अगर कोई भी चीज अपनी मल्कियत शो करनी होगी, अपनी possession शो करनी होगी, तो फिर हम लोग my का जो possessive adjective है, possessive pronoun है, वो यूज करेंगे. अगर हम लोगों ने जो ओनरशिप या पोजेशन शो करनी है वो हमारी कलेक्टिव है, ज्यादा लोगों की है, प्लूरल है, तो फिर हम लोग और यूज करते हैं. वी की जो पोजेसिव फॉर्म है दिस इज और, ओ यू आर, और. दिस इज और स्कूल. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोजेसिव एडजेक्टिव व्हिच इज योर. दिस यू एंड योर can be used for singular persons or for plural persons as well. Singulars के लिए भी हम लोग you और your यूज करते हैं. इसी तरह से plural के लिए भी हम लोग you या your यूज करते हैं. ठीक है, तो ये अगर हमने किसी से पूछना हो is this your bag, ये बैग आपका है, ठीक है, तो फिर हम लोग your लगाएंगे. इसी तरह से कोई भी चीज आपने पूछनी है, is this your pencil, is this your chair, is this your geometry box, whatever. Now going towards he and his. अगर जिसकी possession हम लोग शो कर रहे हैं सिंगुलर है और मेल है, बॉय है, तो उसके लिए हम लोग possessive form his यूज करते हैं. ठीक है. Now in the picture you can see that a boy is sitting with his dog. एक लड़का है जो अपने डॉग के साथ बैठा हुआ है. तो जब हम लोग इसकी possessive form लगाएंगे तो his होगी. He is on the beach with his dog. So his यहाँ पर possessive adjective. फीमेल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? She की जो possessive form है वो her होती है. She is reading her book, her pencil, her geometry box, her chair. Next is it. It की जो possessive form है वो its है. It बेजान चीजों के लिए या animals के साथ हम लोग यूज करते हैं. मिसाल के तौर पर an example is given here. This is my chair and its color is black. So to show the possession of this chair, we use the possessive adjective its. क्यों? क्योंकि ये चेयर बेजान है, इसलिए हम लोग इसका जो possessive its है वो यूज करते हैं. Now they and they. They की जो possessive form है वो their है, and they is used for plural persons. जब हम लोग ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो they यूज करते हैं, चाहे वो boys हों, चाहे वो girls हों, चाहे वो दोनों हों, तो हम उनके लिए they यूज करेंगे. इसी तरह से जब उसकी possessive form हमने लगानी है तो that will be their, their. They are reading
their books. ठीक है, तो ये जो their है ये यहाँ पर possessive adjective. Now this is an activity time to check what have you learned from this lecture. You have to solve the second sentence in each example. For example, this is Ali's pencil. ये अली की पेंसिल है. अब नीचे जो सेंटेंस है इसमें आपने प्रॉपर possessive adjective प्लेस करना है इस खाली जगह में कि कौन सा आएगा. तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या लगना चाहिए. सेकंड सेंटेंस इज दैट इज आलिया's chair. अब आलिया's चेयर की जगह पर आलिया's की जगह पर नीचे लाइन नेक्स्ट सेंटेंस में देखें दैट इज डैश चेयर. तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में आपने possessive adjective लगाना है जो आलिया के साथ सूटिंग हो. थर्ड सेंटेंस देखें those are my parents' keys. पेरेंट्स की जगह पर आपने एक प्रॉपर suitable possessive adjective लगाना है. Thank you class for watching this lecture. Hope you will solve all these sentences. Thank you. Allah Hafiz.